Hello friends, welcome to Bareilly Tuitions. Friends, today we are going to study about effects of earth movement. This is the topic of class 5th, subject social science. So, let us start the topic. Friends, in earlier class, you have read about the movement of earth. These movements are rotation and revolution. Rotation is the spinning movement of the earth on its axis from west to east. The Earth completes one rotation on its axis in about 24 hours, 23 hours and 56 minutes, making one Earth day. Means अर्थ जो है उसके दो मूवमेंट होते हैं. एक मूवमेंट होता है रोटेशन और दूसरा मूवमेंट होता है रिवोल्यूशन. अर्थ का अपनी एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है, स्पिनिंग मूवमेंट जो होता है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं और ये मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है. अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में लगभग 24 आवर का टाइम लेती है. इसमें 23 आवर्स एंड 56 मिनट का टाइम लगता है, जो कि एक अर्थ डे का फॉर्मेशन करता है. अर्थ अपने एक्सिस पर मूवमेंट करती है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं और ये लगभग हमारा 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. अब बात करते हैं रिवोल्यूशन की. रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. मींस अर्थ का सन के अराउंड जो मूवमेंट होता है उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. द अर्थ completes one revolution in 65 and 1/4 days. और इसी को हम बोल सकते हैं 65 days and 5 hours and 48 minutes. This makes one earth year or a year. Now let's read about these two movements in their effect in the little more detail. First one is rotation. The earth rotates on its axis. The axis of the earth is an imaginary line which passes through the center of the earth. Here in this picture you see this is the axis of rotation. यहाँ पर ये एक इमेजिनरी लाइन शो की गई है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं. The upper end of the axis is the north pole and the southern end is the south pole. The axis of the earth is tilted at angle of 66.5 degree to the pole of the earth's orbit. और जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट किए हुए है, झुके हुए है. Now we will discuss about effects of rotation. Let us read about the effects of rotation. First is formation of day and night. As the earth rotates, one half of the earth that faces the sun experiences the day, while the other half
is away from the sun experiences night. The length of the day depends on the number of hours that a place on earth faces the sun. मीन्स कि अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस करता है वहां पर डे होता है और दूसरा पार्ट जिधर इसकी शैडो रहती है वो पार्ट इसको नाइट फेस करता है। और ये ड्यूरेशन डिपेंड करती है कितने घंटों वो फेस सन को फेस करता है, वो पार्ट सन को फेस करता है, उतने टाइम वहां पर डे रहता है। अब यहां पर बात करते हैं सनराइज इज अर्लियर इन कंट्रीज लाइंग इन द ईस्ट सिंस अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, सो कंट्रीज इन द वेस्ट have sunrise earlier than the countries in the west. Here, Japan is the first country to see sunrise because it is located in the extreme east of the eastern hemisphere. Therefore, Japan is called the land of rising sun. इसीलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है क्योंकि जापान जो है वो एक्सट्रीम ईस्ट में है, ईस्टर्न हेमीस्फीयर के एक्सट्रीम ईस्ट पार्ट में प्रेजेंट है जापान, इसीलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन के बारे में। As the earth is rotating on its axis, it is also revolving around the sun on its orbit. जैसे जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, इसी तरह अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर भी घूमती है, जिसको हम इसका रिवोल्यूशन बोलते हैं। यहां हम पहले ही बात कर चुके हैं, द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 and 1/4 days or 365 days, 5 hours and 48 minutes. This make one अर्थ ईयर और ये पृथ्वी पर या अर्थ पर एक साल का फॉर्मेशन करता है। For convenience, we consider a year consisting of only 365 days. हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए जो हमारा एक साल है इसको 365 डेज का मानते हैं एंड लीव आउट द 6 आवर्स, और जो 6 घंटे, लगभग 6 घंटे जो हमारे पास बचते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। These 6 hours are added up to make one day after a period of 4 years. और ये 6 घंटे हर साल ऐड होते जाते हैं और ऐड होते होते हर 4 साल के बाद या हर चौथे साल ये एक पूरे डे का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 4 into 6 is equal to 24 hours. This extra day is added to the month of February. और यही एक्स्ट्रा डे जो है हमारे फरवरी मंथ में ऐड होता है। दिस एक्स्ट्रा डे to form a leap year. Thus, every fourth year, February has 29 days instead of 28. Such a year has 366 days and is called a leap year, जिसको हम leap year बोलते हैं। Friends, now
we'll discussing about effects of revolution. Let us read about the effects of revolution. Revolution causes the seasons. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. रिवोल्यूशन जो है सीजन्स का फॉर्मेशन करता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ revolution is the formation of season. In fact, seasons are caused due to the combined effect of two factors. First is revolution of the earth in its axis around the sun. Second is tilting of the earth's axis at an angle of 66.5 degree to the plane of its orbit. जो सीजन्स का फॉर्मेशन है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है इसका अर्थ का रिवोल्यूशन जो सन के चारों ओर होता है, और दूसरा फैक्टर जो है अर्थ का एक एंगल पर टिल्ट होना. बिकॉज ऑफ द tilted axis of the earth, when one part of the earth tilts toward the sun, the other part tilts away from the sun. The part of the earth that leans towards the sun has summer, the other part that leans away from the sun has winter. Remember, as the earth moves around in its orbit, it tilts in the same direction. That is, it inclines in the same direction. At certain positions in the Earth's orbit, each pole sometimes comes to lean towards the sun and sometimes away from the sun. See the diagram of seasons to understand this concept. इस concept को समझने के लिए हमें ये डायग्राम को देखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है. यहाँ पर हम देख सकते हैं revolution and formation of seasons. Earth experiences four main seasons: summer, autumn, winter and spring. During revolution, there are two important positions of the earth. First is equinox and second is solstice. The term equinox is derived from the Latin word equinoxium, which means equal day and night. In this diagram, this position shows spring equinox and this position shows autumn equinox. There are two equinox positions, autumn and spring. When the sun shines vertically over the equator and day and night are equal throughout the world. The term solstice is derived from the another Latin word solstitium, which means sun standing still. The solstice position occurs twice. Once when the sun is at its northernmost highest point over the Tropic of Cancer, means in this position. June 21st, summer solstice. And the next when the sun is at its southernmost lowest point over the Tropic of Capricorn. Here, December 22, winter solstice. This is marked by the longest and shortest day respectively. इसमें सबसे पहला है जून 21, इसको हम समर सोलिस्टाइस बोलते हैं. The North Pole is tilted towards the sun. ये यहाँ पर समर सोलिस्टाइस का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है. इसमें हम देख सकते हैं जो नॉर्थ पोल है वो सन की डायरेक्शन में टिल्ट किया हुआ है. ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये एरो
हमें सन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इज tilted towards the sun. The sun shines directly over the Tropic of Cancer. As a result, the northern hemisphere experiences summer. On 21st June, the northern hemisphere has the longest day and the shortest night of the summer season. This position of the earth is called the summer solstice. All the places lying beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. At this time, in the southern hemisphere, all the conditions are just the opposite. At this position, the southern hemisphere experiences winter season. Nights are longer than days. The areas near the South Pole receive less heat as the pole is tilted far away from the sun. Friends, next we will discussing about September 23rd autumn equinox. Neither of the poles is tilted towards the sun. On September 23rd, the sun shines directly over the equator. Therefore, the entire Earth experiences equal day and night time. This position of the Earth is called the autumn equinox. In this position, the northern hemisphere experiences autumn season, while the southern hemisphere experiences spring season. Next, we will discussing about December 22nd, winter solstice. This is the diagram of winter solstice, December 22nd. The North Pole is tilted away from the sun. Tropic of Cancer receives less heat as it is tilted away from the sun. As a result, the northern hemisphere experiences on December 22nd, the northern hemisphere has the shortest day and the longest night of the winter season. This position of the earth is called the winter solstice. Next point, all the places lying beyond the Arctic Circle experiences continuous darkness of for about 6 months. At this time, in the southern hemisphere, all conditions are just the opposite. At this position, it is summer season here. The days are longer than the nights in the southern hemisphere. The areas near the South Pole receives more heat as the rays of the sun fall on them directly. Next, we are discussing about March 21st spring equinox. Neither of the poles is tilted towards the sun. On March 21st, direct rays of the sun fall on the equator. Therefore, the entire Earth experiences equal day and night time. This position of the Earth is called the spring equinox. Now, the northern hemisphere has spring while the southern hemisphere has autumn. Now, you know the effect of the movement of the Earth. Rotation causes day and night, and the revolution and tilted axis of the Earth cause a cycle of seasons. So friends, this is the explanation of chapter 2nd, effects of Earth's movement. I hope you like this video. If you like this, please like and share this video in your friend circle and also subscribe
my YouTube channel. Thanks and have a nice day.